100 hours, 100 stars. Hello and welcome. एक बार फिर से मैं आपके साथ में हूँ आरजे अनमोल एंड दिस इज वन बिग ट्रिब्यूट, वन ह्यूज ट्रिब्यूट फॉर ऑल आवर कोविड वॉरियर्स. आप जैसे कि नाम से जान चुके हैं कि 100 hours, 100 stars, 100 घंटों में 100 सितारे हमारे साथ में जुड़ेंगे. उनके साथ हम बातें करेंगे कि वो क्वारंटीन में क्या कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में क्या क्या नई नई चीज़ें की. लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है जिसे आप पूरा करेंगे. बातचीत के दौरान आप नीचे देखेंगे एक लिंक या फिर एक QR कोड. उसे आप स्कैन कीजिए या लिंक पे क्लिक कीजिए और डोनेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक एक पैसा जो इकट्ठा होगा पूरी राशि जाएगी PM केयर्स फंड में. वो फंड जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है हमारे कोविड वॉरियर्स के लिए. लेट्स ऑल बी टुगेदर हिंदुस्तान, लेट्स ऑल बी टुगेदर एंड बीट कोरोना लाइक दिस. आज इस वक्त मेरे साथ में जो जुड़ने वाली हैं, क्या कहूं मैं इनके बारे में. नाचे दिल्ली, हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन. Alright, so there you have my favorite Raveena Tandon. What's up? How are you doing? All good, yeah. Hi. Anyway, all good, yeah. Good to see you all cheerful and happy, and I love the white. You're looking, you're glowing. I think this lockup is suiting you. Oh yeah, मेरा तो एक ही कहना है कि जैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, we have to see the glass half full. Positivity is always in life, और मिल जाती है पॉजिटिविटी. ट्रस्ट मी. करेक्ट. और इतना समय आपको आपकी खूबसूरत बीवी के साथ मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए. सिर्फ हम दोनों हैं और बिल्कुल हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए वाला सीन है. Oh, how sweet. God bless. God bless. Although with all the work we have become made for each other now. How sweet. I think that's the best thing. अभी सब MAID. सबको दाल आटे का भाव पता चल रहा है, बोलते हैं. I swear. इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, I think for all those who are watching, dude, just looking at Raveena Tandon, you should just go click on that link, because आज की जो बातचीत है उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है, और वो ये है कि हम सबके सब एक सबसे बड़ा ट्रिब्यूट इकट्ठा कर रहे हैं फॉर आवर कोविड वॉरियर्स. तो नीचे जो QR स्कैन का कोड है उसे आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना डिटेल्स भरिए, अपना अमाउंट भरिए एंड डोनेट, बिकॉज दिस इज अ डोनेशन फॉर आवर कोविड वॉरियर्स. सीधा हमारे PM केयर्स जो फंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है उनके लिए उनकी तरफ ये डोनेशंस बढ़ेंगी. बट रवीना, कैसा रहा है आपका क्वारंटीन और लॉकडाउन अब तक? देखिए, दुखद बात तो ये है कि जो ट्रेजेडी हमारे इर्द गिर्द अनफोल्ड कर रही है, जो रोज हम सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी दुनिया के कोने में इतने सारे जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो रहे हैं, दुख तो बहुत है. लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आई बिलीव इंसान जो है वो अडेप्ट करने में माहिर है. तो हम भी ये लॉकडाउन जो बंद है, हम अडेप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारी सेफ्टी के लिए है. तो कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में बहुत एक्चुअली मेन इम्पोर्टेंट बात वो होनी चाहिए अनमोल, कि जो भी हम अगर ये लॉकडाउन में है, बहुत सारे लोग ग्रम्बल कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये क्या हमको लॉकडाउन कर दिया ये वो. लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इस समय उनके और उनके परिवार के लिए इस सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें. क्योंकि ये एक ही उपाय है इस समय, जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगा हमारे दुनिया के साइंटिस्ट को, तब तक ये एक ही उपाय है सुरक्षित रहने का, कि आप एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किसी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट में न आए जिनको खुद पता नहीं कि उनको कोविड है. Right, they might be a carrier, you just never know. Yeah. Exactly. तो अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप बीमार हैं, हम तो ठीक है और वो भी ठीक था जिससे मैं बात कर रहा था, वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक कैरियर भी हो सकता है. उनकी तबीयत ना बिगड़ेगी लेकिन आप उससे पकड़ सकते हैं. तो बहुत जरूरी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें ये देखना कि हमारी सुरक्षा के लिए है. हमको हमारे परिवार को और इर्द गिर्द हमारे नेबर्स को और बेसिकली इस पूरे देश को सुरक्षित रखना है. दिस इज अ कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. ये सिर्फ एक देश का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द एंटायर प्लैनेट. तो हमें हमारे वी हैव टू हील आवर प्लैनेट नाउ. राइट, एब्सोल्युटली. बिल्कुल, ये रीसेट बटन दबा दिया गया है. सो लेट्स ऑल रीसेट फॉर आवर लाइव्स इन फ्यूचर. लेकिन क्योंकि बहुत सारा वक्त एकदम से मिल गया है,
तो रवीना अपने घर पे क्या क्या चीजें ऐसी कर रही हैं जो कि पहले नहीं की थी और अब इस क्वारंटीन में कर रही हैं? वाकई में पूछेंगे तो अब तक जो पहले नहीं किया था वो टिकटॉक वीडियोस कभी नहीं बनाए थे मैंने। The new TikTok star we have, Ravina Tandon. My daughter forces me to make these TikToks. Mama, come on, let's make TikToks. कुछ शौक नहीं था, लेकिन हाँ अब मजा आता है, लोगों को मजा आ रहा है. Keeping people entertained is it brings a smile on someone's face. So many of my friends were messaging me, you know, that you just bring a smile on our face when you do all this stupidity. I was like, okay, thank you so much. It is lovely. And you said your friends talk about this. There was a very cute TikTok video जो आपने friends का ही किया था. I think Joey और Jennifer Aniston के बीच का डायलॉग था. I love that video of yours. Let's recreate that video right now. Oh my God, okay. Between you and me. Okay, that done. One, do you know something वाला? Which one? Okay, done. एक बार सुना दो, हाँ. Do you know something वाला? हाँ. अच्छा, हाँ, do you know something? Okay. Do you know something? I might know something. I might know something too. What's the thing you know? Okay, no, done, I can't tell you. done. I can't tell you what I know. Well, then I can't tell you what I know. Okay, fine. Do you know something? Okay, 2 minutes. Okay, Yeah, I'll start. Yeah. Okay. Do you know something? Do you know something? I might know something. I might know something too. What's the thing you know? Oh no, I can't tell you. Just tell me what you know. I can't tell you what I know. Well, then I can't tell you what I know. Okay, fine. Okay, fine. Superb. Just love those videos of yours. अभी एक और डाला था जिसमें घर में को बिल्ली को लेके या डॉगी को लेके ऐसे झूठे माटे सब्जी सर पे लेके और ना जाने अभी you told me once कि फलियां छीलने का कंपटीशन चल रहा था घर के अंदर. या तो क्या हो रहा है घर में अभी बच्चों को भी ये आई थिंक अच्छा मौका है उनको. नहीं तो बिजी रहते हैं स्कूल में, अभी वर्चुअल स्कूल है तो उनको घर में भी ज्यादा समय मिल रहा है. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी स्टार्ट ट्रेनिंग आवर किड्स. बिस्तर कैसे बनाना, झाड़ू कैसे करना, सब्जियां कैसे यू नो हाउ टू गेट द सब्जीज ऑर्गेनाइज्ड फॉर जस्ट प्री कुकिंग. तो ये सब हम लोग कर रहे हैं एंड बच्चे भी सीख रहे हैं. तो आई थिंक बहुत ही अच्छा मौका है ये सब करने का. तो हम बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए हम लोग कॉम्पिटिशंस खेल रहे हैं घर में कि इतनी फलियां सबको दिए, अब कौन अच्छी तरह साफ करके पहले फ्रिज में रखता है. तो वो हमारी कॉम्पिटिशन चलती रहती हैं. बट आई थिंक उसके अलावा यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो वेरी क्रिएटिव. कुछ लोग अपने पेंटिंग में वापस गए हैं, कुछ लोग पोएट्री लिख रहे हैं. आई थिंक इट इज सच अ ग्रेट टाइम टू डिस्कवर योरसेल्फ आल्सो. नहीं तो हम लोग की जिंदगी क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी तो वी आर ओनली रशिंग, वी आर ओनली मीटिंग डेडलाइंस. बच्चे लोग सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल में आ रहे हैं, फिर क्लासेस में जा रहे हैं. सो आई थिंक मी टाइम दिस टाइम आई थिंक our planet has given us to introspect. कि हम लोग जा क्या रहे हैं, exactly हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग this is forced introspection. But I think towards the end I feel कि जो हमारी humanity, हमारा human race है, मुझे एक hope है कि हम लोग positivity की तरफ शायद बढ़े. अगर आप कल वीडियोस देखेंगे लोगों ने the river Ganges, गंगा, हमारी जो रिवर है गंगा, उसकी तस्वीरें भेजी और वीडियोस क्रिस्टल क्लियर. हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, हम लोग अरे इनकी नदियां इतने साफ हैं, देखो क्रिस्टल क्लियर हमारी नदियां. लेकिन कर कौन रहा है? हम लोग कर रहे हैं. अभी पिछले सिर्फ मतलब आप धरती को गिव प्रकृति अ चांस एंड आप देखो वो किस तरीके से अपने रंग एकदम खिल के लाती है हमारे सामने, जो अब हम देख रहे हैं. क्या 1 महीना हुआ है, 1 महीना कुछ दिन हुए हैं एंड देखिए किस तरीके से माँ गंगा ने अपने आप को एकदम साफ करके हमको एक रूप दिखाया है. एंड हम क्या करेंगे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होएगा हम कचरा, कूड़ा, दुनिया भर का जो गंद है वापस इन नदियों में डालेंगे और वापस हम अपने आप को ही. I believe that this coronavirus is a man-made disaster. I strongly believe that it is our own creation. हमने इतने pollutants, इतना सब फैला रखा है दुनिया में कि this is a lesson for us to learn. So I am hoping for positivity कि अगर इंसान इसमें से निकले, जल्द ही निकले, भगवान करे जल्द निकले, और अगर निकले तो एक पॉजिटिव और एक लिटरली ऑर्गेनिक थॉट के साथ कि ये हमारी धरती है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल्स बदलनी है.
वाह, पॉजिटिविटी की बात की है, आपके डैड के बारे में कुछ बातें करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे रवीना टंडन हैज बीन वेरी वेरी अनफेयर टू मी, लेकिन ऑल ऑफ दैट उसके पहले मैं बताता हूँ उसके पहले ये है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारी जो बातचीत की वजह है 100 hours 100 stars, द रीजन इज दैट वी आर गोइंग टू कलेक्ट फंड्स फॉर आवर कोविड वॉरियर्स। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फंड तैयार किया है पीएम केयर्स, उसमें डोनेशन जाएंगी, तो प्लीज नीचे जो लिंक है उसमें क्लिक कीजिए या फिर जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन कीजिए और अपने डिटेल्स भर के प्लीज डोनेट राइट नाउ प्लीज। ओके, सो आई टोल्ड यू हाउ यू हैव बीन वेरी वेरी अनफेयर टू मी। और ये कैसे प्लीज? मैं बताता हूँ। तो आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है कि मेरी आपसे पहली मुलाकात कब हुई थी, ठीक है? हाँ तो जी। 90s, देखिए 90s का वक्त ऐसा वक्त था कि कोई भी लड़का आप कहीं पे भी दुनिया जहां पकड़ लो और उससे पूछो कि किस पे क्रश है, तो पहला सबका आंसर रवीना टंडन होता था। तो आई एम नो यूनिक गाय, अपना भी वही हाल था, ठीक है? तो अपन पढ़ाई वढ़ाई करके कॉलेज करके सब बड़े हुए, फिर अपने को बॉम्बे जाना है, अपने को कुछ बनना है बॉम्बे जाके, अब हम बॉम्बे आ गए हैं। तो 2010 में मैं बॉम्बे आ गया, 9-10 में जी। और वो था होली का मौका था। हमारा एक दोस्त था जिसका ऑटर्स क्लब में मेंबरशिप था। तो ऑटर्स क्लब, जो लोग बॉम्बे के बाहर हैं, यहाँ का एक बड़ा पुराना बड़ा फेमस क्लब है, वहां पे होली का माहौल था, वो हमें ऑटर्स क्लब ले गया। मैं कहा चलो जी ऑटर्स क्लब जाके देखेंगे। वहां पे जाके हमने स्विमिंग पूल में छलांग मार दी, हम स्विमिंग पूल के अंदर होली मना रहे हैं। अब देखिए आप इस लड़के की हालत देखिए, जिसका 90s में जिसके कमरे में रवीना टंडन के पोस्टर थे, और वो मेरे को डुबाए। अब मैं उठ के बाहर निकला हूं और मैं क्या देखता हूँ स्विमिंग पूल के अंदर नजारा कि रवीना टंडन यूं करके स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही है। आप सोचो इस लड़के की वो आखिरी होली हो सकती थी। You were there with your family celebrating Holi in that pool, and I was like, dude, what is this? जैसे तो हमारे कमरों में तो आपके पोस्टर होते थे, आपके कमरों में बचपन में किसके पोस्टर होते थे? ऑनेस्टली कभी पोस्टर्स नहीं लगाए। एक मैं स्क्रैप बुक रखती थी। Okay. उसमें एक जमाने में 2-3 बार खाली सिर्फ एक फोटोज उसकी इनकी थी, बता दो, शर्माओ मत। इतना शर्माओगे आप? बाप रे। No, I'm शर्माing because how could I forget the name? I'm going blank. Last Christmas किनका था? Wake me up before you go यार। Oh, George Michael. George Michael. I had a big crush on George Michael. But while growing up, when I was really small, like I was about 9 or 10 years old, I had I think I used to love the best Jodi. I had a crush on a Jodi, not on one person, Chintu ji and Neetu ji. I used to just love them. Unki Jodi, I used to just love them when I was small. Then when later in school, I think it was Sanjay Dutt, I had the hugest crush on. And then when I started working, I was about 16 and a half, I think I started working straight out of school, straight out of 10th standard. So I signed 7 films with him. अगर आपकी हालत पूल में हुई होगी, can you imagine my हालत में working with him? I used to be like, I'm working with Sanjay Dutt. It was a big thing for me. अच्छा, आपने जोड़ी का नाम लिया, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, ऑफ कोर्स उनकी एक जो है उनकी भी फेवरेट है, हमारी भी फेवरेट है, वो है खेल खेल में, जिस फिल्म को बनाया था आप ही के डैड रवि टंडन साहब ने। और जैसे मैंने कहा था, आई वांट टू टॉक अबाउट रवि अंकल, हाउ इज ही डूइंग बाय द वे, my lots of love to Ravi uncle, please. I will convey it to him. Touchwood, they are both doing fine, पापा and मम्मी। हाँ, थोड़ा अकेले महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे तो बच्चे लोग हैं और सब लोग हैं, तो तुम लोग बिजी हो, रौनक लगी रहती है। मैं और मम्मी अभी साथ में बैठे रहते हैं, बस आप लोग की बातें करते रहते हैं, तो मैं फेस टाइम करती हूँ उनको मॉर्निंग इवनिंग, एंड देन आई टॉक टू देम। एंड पिक्चरें खूब सारी देख रहे हैं वो आजकल। पापा इज वाचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज एंड ही इज रियली एंजॉयिंग देम। एंड सो वो भी अपना समय ऐसे ही बिता रहे हैं, अलग अलग चीजें, खाना बना रहे हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी उनकी बातें होती हैं, इतनी मोटिवेशन वाली, इतनी पॉजिटिविटी की। कोई डैड की बात जो उन्होंने आपको लाइफ के किसी मोड़ पे बताई हो? आई थिंक पापा की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक तो लाइफ के बारे में, ऊंच नीच लाइफ को कैसे बैटल करना, और इंसान ऑलवेज कहते हैं कि एक इंसान की हिम्मत और जज्बा तभी पता चलता है जब वो गिरता है लाइफ में। धक्के सबने खाए हैं जिंदगी में, हमने भी खूब खाए हैं। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने धक्के नहीं खाए हो जिंदगी में, लेकिन उस इंसान का जज्बा तभी पता चलता है, हिम्मत पता चलता है, जब वो अपने आप को उठाकर किस तरीके से समेटता है।
एंड पापा ऑलवेज यूज्ड टू एक्सप्लेन, यूज्ड टू से जब बच्चा चलना सीखता है तो 1000 बार गिरता है, लेकिन वो वहां बिखर कर पड़ा नहीं रहता, वो अपने आप को उठाता है और फिर चलता है टिल द टाइम ही वॉक्स प्राउड लाइक अ मैन, यू नो. सो दिस इज वन थिंग व्हिच हैज स्टेड विद मी ऑलवेज. देन वो किस्से भी सुनाते थे, इंडस्ट्री के भी किस्से खूब सुनाते थे वो. तो इसलिए यू नो एक कंपैशन जो इंसान में होता है, यू नो, यू कम टू नो. माय डैड स्टार्टेड एज अ जूनियर आर्टिस्ट. फिल्मालय में उनकी 2 रुपए की तनख्वाह थी पर डे. उस जमाने में उन्होंने शुरू किया था फिल्मालय एज अ जूनियर आर्टिस्ट. और उनको याद है कि वो एक सीन कर रहे थे और बहुत सारे लोग थे और वो उनको एक डायलॉग बोला क्या था, कुछ ऐसे भाला लेके खड़े होके कुछ एक डायलॉग बोलना, और कोई डायरेक्टर साहब थे और वो उनसे डायलॉग बोला नहीं गया. वो नर्वस हो गए जब उनका टाइम आया, तो एक टेक दिया, दूसरा टेक दिया, तीसरा टेक दिया, और वो बेचारे घबरा गए थे. पापा की पहली बार थी, वो आगरा से आए हुए थे, उनको आदत नहीं थी इस तरीके से, यू नो. तो उस समय उनको याद है कि वो डायरेक्टर इतने भड़क गए, अरे कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, बाहर निकालो इसको, निकालो यहाँ से. एंड माय डैड वाज थ्रोन आउट ऑफ द सेट. बहुत साल गुजर गए एंड पापा को पहला ब्रेक मिला एज डायरेक्टर. ही वाज असिस्टेंट टू आर.के. नैयर साहब आफ्टर लव इन शिमला, एंड उनको ब्रेक मिला तो वो अपनी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे. एंड वो एक डेकॉइट फिल्म थी और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्राज थे. तो पापा बैठे हुए थे, लंच ब्रेक था और वो बैठे हुए थे और वो अपना लंच कैमरा के पास बैठे थे और लंच स्टार्ट कर रहे थे. तो दूर से उन्होंने किसी को देखा एंड उनकी नजर गई उनपे एंड ही केप्ट स्टेयरिंग एंड ही सेड, ओह माय गॉड, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे उस सेट से निकाला. एंड पापा गए उनके पास और बोला, सर आप प्लीज आके मेरे साथ बैठिए. Wow, goosebumps, dude. I heard this, yes. Yes, he asked that director gentleman के सर आप जूनियर आर्टिस्ट में कैसे? बोला बस यार टाइम की बात है. And that same director ultimately to feed himself and his family had to become a junior artist क्योंकि उनका करियर खत्म हो गया था, तो वो खुद जूनियर आर्टिस्ट में थे. तो पापा उनको लेके आए. नेक्स्ट शॉट जब शुरू हुआ, ब्रेक खत्म हुआ, पापा ने कहा, सर आप नेक्स्ट शॉट आप मेरे लिए सेट करेंगे, मैं यहाँ आपके बगल में बैठूंगा और आप शॉट सेट करेंगे. And you know, this is the humanity I have learned from my father. Amazing. And That is Papa what makes you beautiful, Raveena. That's because that's the beautiful person that you are. Yeah. And पापा बोलते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे मेरी आंखों में, and he just hugged me and said, thank you यार रवि, you know, thank you, आज तुमने मेरा दिल बड़ा कर दिया. So this is humanity that we all have to learn. We have to learn to appreciate each other. Superb. ये humanitarian side की बात इसलिए भी मैं करना चाहता था because ये वक्त है, this is the time जब हमको वो side बिल्कुल जिसे कहते हैं पूरी तरह से बाहर निकाल कर दिखानी है, that side of us. And one of the things, you know, Raveena, which you started, and I also became a part of that campaign, वो है जीतेगा इंडिया, जीतेंगे हम. जी. How can people be hitting doctors? How can people be fighting with doctors? वो भी ऐसे वक्त में. So sad. जी बहुत. जब हम न्यूज में देखते हैं और जब हम दूसरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो बहुत ही दिल एक मायूसी हो जाती है कि कहाँ गई इन लोगों की इंसानियत. यही डॉक्टर्स हैं जो अपने घरों में नहीं जा रहे हैं, वो रोज पेशेंट्स के साथ 24 घंटे अस्पतालों में हैं, आईसीयूज में हैं. कुछ ऐसी नर्सेज हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके न्यूबॉर्न बेबीज हैं, वो अपने छोटे बच्चों के पास भी वापस नहीं गए हैं क्योंकि वो आपकी जान बचाने में लगे हुए हैं इस समय. एंड इस समय जो हमारे दिस इज अ वॉर अगेंस्ट कोविड-19. एंड जो हमारे फ्रंट लाइन के सोल्जर्स इस समय हैं वो कौन है? वो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उपाय भी उन्हें निकालना है और दवा भी उन्हें देनी है और उन्हें ही हमको बचाना है. तो अगर हम ही उनके ऊपर थूकें, चप्पलें मारें, ईंटें फेंकें, मतलब हम लोग ने जो टीवी पे देखा, जो घरों के ऊपर लोगों ने ईंटें जमा करके ईंटें मार रहे हैं, वो मुरादाबाद के हमारे एक डॉक्टर का पूरा फेस फाड़ दिया. मतलब कहाँ गई आपकी इंसानियत? आप किस तरीके के इंसान हैं? तो ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. हम सब ने बहुत सारे कैंपेन्स किए इस समय कोविड के लिए, फंड्स के लिए. इस समय भी अब हम फंड जुटाने के लिए, जो बहुत ही जरूरी है इस समय, क्योंकि इन लोगों को चाहिए इस समय वो सपोर्ट और हम लोगों का सपोर्ट. लेकिन मैंने सोचा कि हम सब थैंक यू तो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई आवाज नहीं उठा रहा है ये बोलने के लिए कि ये वायलेंस बंद करो.
हमारी जी। मेडिकल फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट, हमारी मेडिकल कम्युनिटी के अगेंस्ट, हमारी जो पुलिस फोर्स है उनके अगेंस्ट जो वायलेंस जी। हो रहा है, बहुत सही। और वो क्यों, वो तो सिर्फ हमारी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तो Absolutely. आई थॉट कि बहुत जरूरी है कि फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये जो हमारा कैंपेन है जीतेगा इंडिया, जीतेंगे हम, जी। बहुत ही सिंपल बात है कि अगर इंडिया जीता तो मतलब हम भी जीते ना, हम भी जीतते हैं, सही बात है। हम ही जीते हैं, क्योंकि हम ही इंडिया हैं। तो अगर आप और हम इंडिया हैं तो हम इंडिया को कैसे जिताएंगे? तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो हमारे पुलिस फोर्स है, उनके ऊपर ये वायलेंस बंद होना चाहिए और बहुत ही Yes. कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए लोगों को जो इस तरीके का सब वायलेंस कर रहे हैं। करें। तो अगर हर पीपल फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, there are publishers, there are cricketers, there are sports people, there are cricketers, there are RJs like you, there are VJs, there are मेरी fraternity के लोग हैं, Yeah, directors हैं, there are police people, some of your friends who are from the police force, they have joined Yeah. the campaign. तो Yeah, this is and ये campaign मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, सिर्फ क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं उसकी वजह से नहीं है। ये नहीं। आप भी कैंपेन ये कर सकते हैं, आप भी अपना वीडियो बनाइए और ट्वीट कीजिए विद दिस हैशटैग कि जीतेगा इंडिया तो जीतेंगे हम, क्योंकि आप ही इंडिया हैं, तो आपने ही इस देश को सुधारना है। इमेजिन दीज वॉरियर्स जो कि हमारे लिए फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, कोविड हुआ, इनको कोरोना से ग्रस्त हुए एंड दे हैव लेड देयर लाइव्स, ये शहीद हैं, डॉक्टर्स, ये पुलिसमैन, ये शहीद हैं। लेट्स बी एटलीस्ट गुड सिटीजंस, वर्दी सिटीजंस, जिनके लिए वो लोग अपनी जान दे रहे हैं, तो लेट्स डू आवर जॉब्स। एंड ये जो फेक रूमर्स, क्योंकि ये लोग क्यों भड़क जाते हैं, क्योंकि फेक न्यूज और फेक रूमर्स फैलाते हैं लोग, अफवाहें फैलाते हैं, ये लोग उसमें ब्रेन वॉश हो जाते हैं, उसमें यकीन कर लेते हैं और फिर इस तरीके का व्यवहार होता है। So I think it's very very important for us कि हम इस बात के लिए आवाज उठाएं और बोलें कि हम हमारी मेडिकल कम्युनिटी के साथ हैं और इस तरीके का वायलेंस प्लीज बंद कीजिए। बंद कीजिए, क्या बात है। You know, we all together in every cause related to this war against corona. आप लोग जो देख रहे हैं, आप भी थोड़ा सा डोनेट करो ना, पीछे जो आपके लिंक दिया हुआ है हमने, उस लिंक पे क्लिक करो ना, QR कोड दिया हुआ उसको स्कैन करो ना। हाँ, ये सब अच्छे वाले कोरोना है, जैसे कि घर के अंदर एक आजकल एक कोरोना बाहर है रवीना, एक कोरोना आप अनिल से पूछना, वो बताएंगे एक कोरोना घर के अंदर है। जब बीवी बोलती है कपड़े साफ करो ना, बर्तन साफ करो ना, वो बड़ा खतरनाक वाला है, बट we'll deal with it। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि you know, इतनी खूबसूरती, इतनी शोहरत, इतना पैसा भगवान ने मुझे दिया है, लेकिन आप देखो मुझे घमंड नहीं आया इस बात का। जी, मजाक करता रहा तो जोक रवीना यार। अच्छा चलो ठीक, ओके, तो व्हाट वील डू इज, सच है ना अनमोल, आप खूबसूरत भी हो, आपके इतने अनमोल रतन है पूरी दुनिया में। मैं नहीं खेल रहा ये, मैं नहीं खेल रहा भाई। चलिए आप खूबसूरत हो ना हो, एटलीस्ट आपकी बीवी तो बेहद लाजवाब खूबसूरत है। तो फिर खूबसूरती भी है आपके पास में, आपके बगल में जो खूबसूरती है उसके बारे में बात कर रही हूँ। देखा, ये हुआ जोक। गॉड बैक, यू आर लाइक, ये बहुत शैतान है रवीना टंडन, वेरी वेरी नॉटी। अरे चलो हम वो टिकटॉक वाला हैंड चैलेंज करते हैं, और यू नो बिकॉज दैट्स गॉट अ पंच आल्सो, उसके साथ में we'll end this amazing conversation. Can you guys please keep donating? You have the link, you have everything. So if you're ready, are you ready? Yes, Anmol. Okay. Lovely talking to you, Baba. नहीं लवली उसके बाद करेंगे, ऐसे नहीं कि उसके बाद बाय अच्छे से करेंगे। हाँ अच्छा। अच्छा, आप पूरा सीख के आए हो? मुझे बोला था मुझे भी नहीं आता, पूरा सीख के आए हो। एक बार इसलिए ये बदला लिया मेरे जोक के ऊपर। पहले में देना तो होना ही चाहिए। ठीक है, डन। चलो रवीना, थैंक यू सो मच। आई जेन्युइनली अप्रिशिएट द टाइम जो कि आपने हमारे लिए निकाला, इस कॉल्स के लिए निकाला। बिल्कुल। We all love you for the person you are, for the soul you are. As always. Thank you. Look at Raveena Tandon look she is wearing, dude. Matlab, dude, look at. Alright,
right, Ravina. Take गॉड care. ब्लेस एंड सबके लिए प्रार्थनाएं प्लीज, जो इस समय बीमार है, गेट वेल सून, स्पीडी रिकवरी। हम सब आपके साथ हैं, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। सो गॉड ब्लेस एवरीबॉडी एट द मोमेंट। Super. All right. Take care. Bye bye. Bye. See you. जब सारी दुनिया कर रही थी बकवास, तब फीवर वॉइस ऑफ चेंज की शुरुआत करते हुए रेडियो पर जॉन इब्राहिम, गौतम गंभीर और वरुण धवन ने मिलकर ये कहा। हाय, मैं हूँ गौतम गंभीर। हाय, मैं हूँ वरुण धवन। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं कहता हूँ बकवास बंद, बदलाव शुरू। फीवर वॉइस ऑफ चेंज का सबसे पहला इनिशिएटिव था नो MC, नो BC। मैं जॉन इब्राहिम कहता हूँ, मैं वरुण धवन भी ये वादा करता हूँ, हम अपनी शहर की औरतों को जुबान से इज्जत देंगे, यानी नो MC, नो BC। उसके बाद मिशन तेजाब में कई एसिड अटैक विक्टिम्स की जिंदगी का रुख बदल दिया। हाय, मैं हूँ आमिर खान और फीवर वॉइस ऑफ चेंज एसिड अटैक विक्टिम्स को एक नई जिंदगी दे रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मिशन जुर्रत में देश के सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर कहा। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाह रहा हूँ। आप फीवर 104 FM मिशन जुर्रत का हिस्सा बने। ये बदलाव की बहुत बड़ी शुरुआत है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जब कश्मीर में फ्लड्स आए, लाखों की तादाद में खाने पीने की सामग्री कश्मीर भिजवाई। हमारी इस कोशिश के लिए मिशन कश्मीर ने जीता गोवा फेस्ट में प्रेस्टिजियस एबी अवार्ड। मैं और आप मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज का अगला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ब्लड बैंक 104। ब्लड बैंक 104। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं जॉन इब्राहिम ये वादा करता हूँ कि इस शहर में जब भी होगी खून की दरकार, तैयार रहेगा फीवर 104। और फिर ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं जाए कोई जान, उसके लिए हमने शुरू की अपनी मुहिम एम्बुलेंस फर्स्ट। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। हाय, मैं हूँ गौतम गंभीर। हाय, मैं वरुण धवन बोल रहा हूँ। हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट। जब भी एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे तो हो जाए लेफ्ट, क्योंकि एम्बुलेंस फर्स्ट। अब बकवास बंद, बदलाव शुरू। एम्बुलेंस फर्स्ट के साथ साथ फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने जिम्मा लिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट का और बनाया ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें एयरपोर्ट से हॉस्पिटल का सफर जो घंटों का था उसे मिनटों का बना दिया। एम्बुलेंस फर्स्ट का डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क तक बजा। रेडियो के ऑस्कर कहे जाने वाले न्यूयॉर्क फेस्टिवल ने एम्बुलेंस फर्स्ट इनिशिएटिव को 2 बार NYF अवार्ड से नवाजा। और फिर कैंसर सर्वाइवर्स की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ जुड़े युवराज सिंह। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ कैंसर सर्वाइवर की जिंदगी के बदलाव के लिए मैं युवराज सिंह तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने वोटिंग परसेंटेज में किया बदलाव अपनी मुहिम ईच वन खींच वन के साथ। नमस्कार, मैं हूँ फीवर RJ अमिताभ बच्चन। चुनाव का माहौल बना हुआ और मैं तो कहूँगा कि ईच वन खींच वन। जब मैं भी वोटिंग करने जाऊंगा तो किसी को साथ खींच कर लेकर जाऊंगा। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने एक ऐसा जश्न मनाया जिसका शोर बॉर्डर पार पहुंचा। मैं गौतम गंभीर। मैं हूँ कर्नल VN थापर, कैप्टन विजयन थापर का फादर। मैं हूँ मेजर गौरव आर्या। फीवर FM के साथ मिलकर कहता हूँ, इस कारगिल विजय दिवस मिलकर ऐसा जश्न मनाएंगे कि शोर बॉर्डर पार पहुंचे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 7 दिसंबर इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे पर फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर दिखाया अपना देश प्रेम। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे अपने फैंस और लिसनर्स से, आप फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे इवन ट्विटर हो, अगर आप अपना फ्रेम चेंज कर सकते हैं 7 दिसंबर को, तो कहीं ना कहीं आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को। दिल्ली की बिगड़ती हवा और पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज लेकर आया प्रोजेक्ट ग्रीन हार्ट्स, जहां हमने दिल्ली NCR में लगाए 1 लाख से भी ज्यादा पेड़। आप पहले 1 या 2 पेड़ों से शुरुआत करो और कोशिश करो कि उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करो। पुलवामा अटैक इस मुश्किल की घड़ी में पूरे देश को शहीदों के परिवार से जोड़ रही थी एक वेबसाइट, भारत के वीर। तो फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मिलकर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने फीवर 104 FM पर DG CRPF से कहा, हेलो डी साहब, शरद। हाँ, नमस्कार। अक्षय भाई मेरे साथ दूसरी लाइन पे। नमस्ते जी। मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैं बोला पूरा देश आपके साथ है इस वक्त। अभी आई हैव जस्ट सेंट 5 करोड़ रुपीस टू भारत के वीर फ्रॉम माय साइड। फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने शुरू की मुहिम #सिंगल यूज प्लास्टिक से ब्रेकअप। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा
आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। और फिर पहली बार देश के किसी मीडिया हाउस की पीठ थपथपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फीवर 104 FM के लिए ट्वीट किया। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के पिछले 5 सालों की ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, लेकिन फीवर वॉइस ऑफ चेंज की टीम जॉन एब्राहम के साथ कहती है, ये बस शुरुआत है, बदलाव अब भी बाकी है। Well, here we go. Thank you so much for joining us. It's 100 hours, 100 stars right here on 94.3 Radio 1. And glad to have you join us together with the Fever Network. Gary Megan, oh my gosh, I'm so excited to connect with you. Thank you, appreciate it. I just realised in the frame, you can tell what time it is, can't you? Let's pretend the clock's not working, but it's 2 o'clock. It's lunchtime. Well, it's what is my mid-morning snack time. I've just had mine. Mine was coffee and a bit of brownie. You know, it's all part of the lockdown diet. I think too many carbs. Tell me about it. Well, mine is actually whole wheat. It's it's whole wheat cake with oats and dates. I'm going healthy. Well done. So let's start with this whole lockdown, Gary. You know, personally, what has it done to you? You know, and you know, what's your story with the COVID-19 and how's it affected you? It's been interesting. I mean, you know, Australia has been, whether it's been lucky or whether it was good decision making on the government's behalf, but we're certainly not suffering like a lot of countries around the world. My parents, for example, my wife's parents are in the UK, and they have just been smashed, you know. So when we're talking about 80 deaths in Australia, I think they're up around the 18,000. So I think a lot of what we've worried about here is our parents, you know, back in the UK. We're staying in touch with them. They're in isolation, obviously, and full lockdown. Yep. So I feel quite lucky. You know, I feel like a lot of us that it's not too bad. You know, like I don't want to make light of it because I think some people are struggling. But, you know, we can still get out. We can go for a walk. You know, we've got our families, which has been an unexpected bonus for me. Yeah. You know, we've got a 19-year-old daughter who, let's be honest, should not be at her age stuck in a house with her parents. Yeah. She passed her driving test not so long ago. She's supposed to be going to uni, so I feel really bad for her. Right. But it's lovely for us. It's just been some nice family time. Yeah. And also an unexpected benefit for me, I think, is just I'm normally so busy. And I've just had time to lose myself in my own thoughts. You know, I've been doing a bit of gardening and doing chores that have been on the list for a long time. And chores that, let's be honest, I'm doing all sorts of, I oiled decks and cleaned windows and reorganized kitchen cupboards. I mean, doing stuff that should be done and stuff that I should never do. Right. It doesn't need to. Yeah. But I think most people are the same. And I think Matt Preston said it to me the other day. We've all turned into our grandmothers. You know, we're baking. We're being, you know, diligent around the house and careful with what we cook, and we're saving scraps and, you know, little tins of chicken fat and I don't know, just all sorts of things to, you know, make the house seemingly and the family seemingly run well and be happy. Right. Well, you brought, you know, Matt Preston into the conversation, and the three of you, you know, you and, you know, George, and all of you guys created this iconic product, you know, MasterChef Australia, which pretty much changed the palette of India. Seriously, we can attribute it to you guys. You know, and you've now gone on from there. You've gone on to, you know, a new chapter in your lives. But talk to us about you and the very special Indian connect that you've developed over the years. Yeah, it's interesting, isn't it? I still can't explain why, and I'm not sure anybody can fully explain why MasterChef became such a phenomenon in India. I mean, whether it was our manner, sense of humour, multiculturalism, you know, whether it was timing in terms of a bit like now, you know, MasterChef's back on air
with the new judges and doing very well because people are stuck at home and they're watching telly. And if you rewind the clock, 11 years ago, we'd just gone through a global financial downturn. There was a lot of negativity in the world. And then all of a sudden, this food program jumped on our screens, went mainstream. And you had 3 judges on it and contestants that were from all different backgrounds, everything you could imagine. And we were quite nice. We weren't, and I know Gordon Ramsay, but, people always go, oh, Gordon Ramsay's screaming and shouting and telling everybody what to do. And we were kind of cut from a different cloth. It was about offering constructive criticism and a way to improve and mentoring these contestants as if they were our own students. Right. And something in all that kind of just captured people's imagination, not just in Australia, but as you say, in India and across the world. I mean, conservatively, at its peak, MasterChef was on in over 150 countries and had an audience in excess of 12+ million people. Right. So it's quite an influence, Yeah. Right. So before we had the conversation, this is to raise funds for our PM Cares funds, 100 hours, 100 stars. And my request here to my Radio 1 listener, who's now a Radio 1 viewer, is to please, look down below, scan the QR code, get onto that link, fill in those details, and please, donate really, really generously, because we really need those funds to help our COVID-19 warriors who are on the front line battling the virus, for our safety every single day. So, please do that. Back to you, Gary. What's cooking? What's cooking in the kitchen? Well, we just, as in actually my house, or what am I doing with my life? Yeah. So, do you have like a quick recipe for us? Like you mentioned earlier, Matt was saying everyone's digging into their pantries or into their food cupboards and trying to figure out what is that old can of beans, or what can I do with this this can of pineapple or bananas. Oh my gosh, my bananas! I shouldn't be saying my bananas, but the bananas. The bananas are ripening, every half an hour or so. What do we do with them? Well, there's so many recipes for banana bread, but there's most people always go, oh, how do you remember a recipe? I don't have a great memory for recipes, but when I look at something, I tend to look at proportions. So, for example, everybody's baking, they're baking bread, they're making cakes. A simple banana bread recipe, if anybody can remember it, is just a combination of fat, sugar, and flour, right? So half cup of brown sugar, half cup of white sugar, half a cup of butter, and obviously you cream that together until it's nice and fluffy and white. Add 2 eggs, and then think of that half cup. Yeah, because we've got 2 lots of sugar and butter, and it's now 1.5 cups of flour. Ah. So that essentially gives you, in terms of proportions, a kind of soft, fluffy batter. But to enhance that, you can add some walnuts. You can add half a cup of sour cream, for example. You can add 3 really ripe bananas. Right. And a lot of it is to do with like people say, oh, how do you make sure a cake is nice and light and fluffy? First of all, the first bit is creaming, the butter and sugars together until, the sugar's starting to dissolve and everything's fluffy. And then as you add the eggs, it's incorporating them properly and making sure they're fluffy, then folding in the flour. And then there's always a little bit of how does it feel? Go back to that, that grandmother, instead of a machine, often, you just make it by hand. And you can feel it. And if it's kind of pillowy and aerated and tastes good when it's raw, then it's going to normally, work when it's in the pan. So there's a little bit of that. I love when I make banana bread, make sure the bananas are really, really ripe, because they look too spoiled to eat normally, but they sweeten, they develop flavor, they're great for ice cream. Yeah. And actually there's a good Pete's ice cream recipe that Matt makes, which is, as bananas start to get ripe, before they get too ripe, where you'd make banana bread, chop them up, stick them in the freezer, and then you just blend that in a food processor, and essentially you get banana ice cream. Oh, really? Yeah. That's really cool. I always try, in terms of wasting food, I always watch those bananas, and before they go past their best, if I'm not up for making a banana bread or something,
then I'll always just peel them, chop them up, put them in a Ziploc bag, chuck them in the freezer, and then they become easy grab stuff for smoothies, banana ice cream, and stuff like this. Yeah, well, that's perfect for the kids as well. You know, are constantly wanting something, and especially something now, different in summer. And I love, in our house, we make things like, meringues, for example. You know, like the Australian pavlova. So you have to constantly, whip and get those peaks, and oh my God, I've tried them. Yeah, I've tried them. But try to remember, burning them. They're so dead easy to make, and you can, put big spoonfuls on a tray, bake them at about 110, 120. So essentially, they're just drying out, and they'll get a little crusty on top, stay white, maybe a bit cracked. And I love smashing things like that. Put a bit of whipped cream, some berries. It's always going to be delicious. And actually, before you cook them, you can crush walnuts, hazelnuts, dehydrated raspberries, pistachios, things like that on top of them, and they become like great little sweet treats. And if you can remember, one egg white is 45 to 50 grams of sugar. Oh, okay, that's what you got to remember. It's so then if you want to make say 5 meringues, you might need 3 egg whites, for example. So then you go, okay, it's 150 grams of sugar. So whip the egg whites a little bit, they get foamy, and then you sprinkle in the sugar, keep whipping or put it on the machine until they're really stiff, peaky. And if you taste that raw egg white when it's a meringue, it should be smooth, not sugary. And that's the key. It's very simple. So 1 egg white, 50 grams of sugar. Another great little recipe to remember is homemade pasta. 1 egg, 100 grams of flour. Okay. Pinch of salt, dash of olive oil. So if you want to make enough for 4, make 300 grams or 400 grams of flour. So it's 4 eggs, dash of oil, pinch of salt. It's, that's proportions. That's right. But it takes a lot of practice. So since we've got time. The good thing about this whole, this whole COVID-19, if there's any positive, is that there's so much online content now on YouTube. Everybody from experts to home cooks to, whoever it is, kids chucking up recipes. So if you want to learn how to make something like even bread or sourdough, just chuck in sourdough on YouTube and you've got 30, 40 tutorials. Yeah. Never seen content like it. It's unbelievable. I have to agree. And if you check our WhatsApp groups, it's everyone's, sharing recipes about their latest gourmet dinner. And I'm like, what's going on? And bread. Everyone seems to be wanting to gravitate towards bread. I think it's that comfort food. And when your home smells of bread, it smells of home, if you get what I'm saying. Yeah, that's great. And it's kind of replacing, I haven't realized, somebody asked me the other day, what's the first thing you're going to do, when restrictions are loosened and we kind of, in some way, whatever that looks like, return to normal. And I said, I've really underestimated, I think, like most people, how much I miss going to a cafe, grabbing a coffee, bumping into friends, going to a bar. Like I said, I just want to go to a bar, sit at the bar, people watch, and watch the bartender make me a drink. Like I want someone else to make me something, Yeah. But I think the positives, but I think the positives is, we're exactly that, sharing stuff, even though we're not actually together. And the sharing of recipes and ideas from a foodie's perspective is really lovely. Right. Now you've worked extensively in India. You've traveled a lot. You've got a very, very, a deep connect with Indian cuisines. I'm really curious, which Indian cuisine do you really, really love, or maybe surprised you? It's like, oh my God, I never knew this happened here. I think I was very lucky. It was about a year and a half ago. I filmed Masters of Taste Family Table, which has been on Fox Life in India, and we basically took 12 cuisines, 12 families and 12 cuisines. Right. So we did everything from Andhra, Kashmiri, Gujarati, we did Jain. I mean, it was just, for me, it was such an eye-opener. And really, I knew that Indian food was, there's no such thing as Indian food, that it was all so regional. And, everybody's so colloquial and proud of their own recipe. Yeah. And just traveling a little bit of the length and breadth of the country, and I know so little. I mean, there's some real experts out there that even I
contact regularly and say, what is this? Or, what would you use? But it just was such a wonderful experience. But one of the big thrills for me was meeting a Jain family and cooking with them, and realizing what the hell are we going to cook, because their whole ethos and what would you call it, their religion, their thinking around life is preservation of life, is non-violence, is so mainly really exclusively vegetarian, even though they drink milk or have curds, but they won't eat cheese. And they have this idea of countable lives and infinite lives. So when you talk to a chef about not being able to eat anything that you pull from the ground or rip from the ground, you can only eat things that you can pluck from the tree or from a grain from the stem of something, that you couldn't use things like cauliflower because they contain infinite, countable lives, and not being able to use cheese or fermented products that I love so much. I just thought, this is going to be terrible. What are you going to cook? But actually, the discovery for me was, obviously, they said, because we've got such a different diet and limited diet by most people's standards, that they think about food all the time. Right. And what they served to me, I essentially ate like a banquet, a thali of different dishes with a rot in the middle, which is like a type of bread. And I was just stunned, I said, okay, so no garlic, no onion, no this, no that. No. I was like, how do you do that? So it was a real thrill, it was, for a foodie who I suppose prides themselves on eating everything and enjoying everything. Right. When you pull the boundaries in, I just thought, well, it's not going to be good, but it was delicious. So that was one of the biggest surprises for me. But stuff that I found utterly delicious. I mean, for example, going to Hyderabad and eating, 3, 4, 5 different types of biryani. Yep. I was just in heaven, like heaven. Yeah. Eating. I had a white biryani, which I'd never had before. Yes. So cooked in milk. The infusion of spices and everything in the milk. I ate an andhra biryani, which was almost like a stir fry, to be honest, like components rather than everything to cook together. And a beautiful family cooked a traditional, I think it was a Nizami recipe, but it was, raw biryani, but it was just traditional dum biryani, but it was, oh my goodness. From a comfort food kind of guy, that was just the biggest warm hug I could ever imagine. You can never go wrong. You can never go wrong. So unfortunately, when I travel and eat that well, it sets everything else up for failure. So if I go to a local restaurant, Indian restaurant here in Australia, and they say, "What do you think?" and I just very politely say, "Yeah, it's lovely. Thank you very much." It's not the real. It's never going to be the same. Yeah. So, you've actually been like an ambassador almost for Australia, bringing, the show and bringing what Australians stand for in terms of food. And I know that Australia, the produce is just beautiful. And I looked at your Insta and you focus on the food, and it's just delicious just looking at it, whether it's, a raw vegetable or whether it's cooked and plated up. So, you have that intrinsic connect with produce. Talk to us about that, and maybe how, we in India can sort of, try and work towards improving, say, produce. Yeah. Well, I think, it's worth saying straight up that things are changing so fast in India. Yeah. It's hard to keep up with. I first visited not long ago, I think 2012, George and I came over and did Ozfest, which is, a kind of cultural festival, to improve relations and business in India, between India and Australia. And, it was a cacophony of everything. It's almost too much. It's like information overload. But even in that short period of time till now, things have changed hugely. I mean, there's some very influential chefs that have steered modern Indian cuisine, and I don't want to upset anybody by saying that. We're not talking about twisted, crazy, spoilt. We're talking about
bringing it up to date, bringing new flavors, and actually often bringing old flavors back into focus. Yep. But the chains of supply, especially into the big cities, like Mumbai is truly, it's like the New York of India. Absolutely. You can get anything you want. You've got growers, you've got artisans and niche suppliers that are popping up everywhere. And you see some amazing stuff. So that is really the start of the explosion, when everything changes. And I think it happened in Australia once we grasped, not just as chefs, but also as avid home cooks, that the ingredients are the drivers, for our creativity. And what I mean by that is if you put the same things in your shopping basket every week, you cook the same things. But if you put different things in, you have to start looking, asking people, looking up different recipes, asking people for different recipes, and, challenging yourself and doing different things. Right. So, I always hear when people talk about Australian cuisine that it's all about the produce, but I don't know if it is. I think we take produce for granted. I think that our produce is that good that we take it for granted. But I think what makes it unique is, like everywhere on the planet, it's the stories, it's the people, it's our personality collectively as Australians. Right. I think, we have a healthy disdain for authority, which I love about Australians. They don't like being told what to do, but actually, that lack of formality, I think, has freed our thinking and allowed us to embrace our kind of this multicultural diversity that we're very proud of. And we're great travelers too. And it's a bit like India now, this explosion that India has experienced, in the last 10, 15 years particularly. And it's strange talking about travel when we've just been, gone through this immense period of change the world. I was about to come to that. So, we have to look at what are we going to do? Post-COVID world, and how, what are your thoughts? How are you going to take things forward with respect to the industry or what you do? It's a tough one because I love traveling. I tend to think that as a person that loves food, that my whole life has revolved around food, that travel is the window into a community, into a family. It binds us, connects us. So it's, even for myself, we had various trips planned this year. We were supposed to be going to Japan, Sri Lanka, back to India, back to Europe. So that's obviously all been put on the back burner. And really, in the short term, there's no travel for any of us. I think as we stretch it out further for Australians, they're just starting to talk about possibly New Zealand being the first place to open up for Australian travellers. Right. So it's just going to be fascinating. Will it become more expensive? Will it become more exclusive like it was, if we rewind the clock 30, 40 years, most people couldn't afford to travel. And then we went through this great period of affordability. Right. So it's going to be interesting to see, is it going to be more expensive? Are people going to be, or is it going to be the opposite, where people are going to be desperate to, chase the business and encourage you to come and join them? So I think a world for me without travel and that food experience, which is really why I travel, is just, I don't know. It's kind of makes me sad. So, even talking about Indian food now, I'm like, wow, I'm missing that, I'll have a biryani for you this weekend. And send me a shot, So, it's going to be interesting. I think obviously, human beings are incredibly, we're resilient and adaptable. That's what's made us successful. As a species, depending on your perspective, we've got some learning to do. But we adapt to the new normal very quickly. So whatever that new normal looks like, I think we'll adapt to it and we'll maneuver around it. Yeah. So, we've got a lot of home chefs in our city, and it's incredible what people are whipping up in their kitchen. So like I shared with you earlier, this is my little slice of cake from a home chef, and she's whipped together a healthy thing. She's used whole wheat, and she's used oatmeal, and she's used dates, and it's absolutely delicious. So considering, like you said, people won't be able to travel, how can you, what would you advise home chefs
to be able to take it up a notch or two, you know, and sort of better their craft? Well, I think, like I said, I think, like I said before, I think the internet, you know, has changed everything beyond our imagination in the last 10 years. It's changed everything from restaurant reviewing to our expectations of what we want to eat, where we travel to, what specific destination we travel to. You know, like if you're going to Spain, you can look up a little tapas bar and find, you know, 30 other people that have been to the same way, and you're instantly transported there. Yeah. So I think maybe we'll live our travels vicariously through the internet and connecting, you know, through that medium, like we're doing right now. It's crazy. But it's, the information there is incredible. And, you know, talking about taking food up a notch, I think that as a reference point, once upon a time as a chef, we used to, and it was a saying back then, we used to have to earn the right to a recipe, which meant that we had to, from our gurus, from our teachers, had to prove that we were worthy of that recipe. And then it changed. You know, we started, but my library is full of hundreds of books. I mean, God knows how many I've got. And then it changed again, because now you can Google everything. You can find a recipe for the most obscure dish on the planet within seconds. And I think that Instagram, particularly for foodies, is a wonderful medium. You know, we know what has been, as chefs, customers, what's been on the best restaurants' menus that evening within minutes. You know, it's changed everything. And I think if we're thinking more locally, I think what this whole lockdown, certainly in Australia, because it's not been as restrictive as India has done, is it's forced people to think locally. And it's been a bit of, that think local has been a bit of, you know, it's been bandied around for a long time and it hasn't meant anything. This has really cemented what that means. You know, buy local, support your local grower, you know, and celebrate it too. And we're discovering that. And by doing that, we get better food. I think by cooking at home more, we care more about where our food comes from. And I think as a chef, as a foodie, as someone that, you know, loves our industry and everything that it is, it's a kind of dream come true that people are paying attention. They've slowed down enough to pay attention. And I think it's really important. For everything, for family, for community, for the planet, you know? Yep, absolutely. So to my Radio 1 viewer now, please donate generously to the PM Cares Fund. I want you to either scan the QR code that you can see down below or click on that link. It'll take you to where you need to go to fill in those details. And please donate generously. All the money is going to go towards our COVID-19 warrior who's on the front lines battling every single day for you and us to stay safe and stay at home. What would your message be to our COVID-19 warriors who are on the front lines, to our healthcare people, our police personnel, all of that? What would you like to say to them? I think, you know, our heart goes out to all these people. I think that when you are, you know, on the front line, and when I've got my sister, for example, and her husband are both in the police force in the UK. And, you know, they're dealing with things that we don't have to deal with every day. You know, so I think they deserve all of our support, you know, and, you know, stay strong on behalf of all of us. It's a tough time. And I've laughed so much, a little bit every day actually, but I've laughed so much at Ricky Gervais, you know, who's the English comedian, who has been relentlessly poking fun at the celebrities around the world who are doing it tough next to their swimming pools, you know, with their big houses and all the rest of it. You know, I just, you know, it deserves a good dose of reality. You know, that there are people working hard and putting their own lives at risk to ensure that the rest of us are safe. True that. Well, I have to thank you so much for being part of 100 Hours, 100 Stars, and, you know, being on this platform and sharing all your wonderful recipes and all your wonderful thoughts, and also, you know, for supporting us in this fundraising effort. Thank you so much, Gary. It's a pleasure, and everybody stay safe, and we look forward to the world returning to a little normality, whatever that looks like, whatever the new normal looks like. Fingers crossed. Yeah. Hi, this is Gary Megan, and before signing off, please stick around because there's much more to come on 100 Hours with 100 Stars.